Namaste students, I welcome you again in RSV Group of Schools YouTube channel. Now we will continue the chemical properties of haloalkanes. That will be, first one is nucleophilic substitution reaction. We have discussed 5 reactions in the previous video, and the next one is formation of alkyl cyanide and alkyl isocyanide. Formation of alkyl cyanide and alkyl isocyanide. See, this is the reaction when haloalkane reacts with KCN. When haloalkane reacts with KCN, it is also react with NaCN. That means alkali metal cyanides. When haloalkane react with alkali metal cyanides, then it will form alkyl cyanides. Then it will form alkyl cyanides with the elimination of potassium halide and sodium halide. With the elimination of potassium halide as well as sodium halide. Okay students, this reaction proceeds in the presence of alcohol. यह reaction alcohol में होगी. When haloalkane reacts with KCN potassium cyanide, the product will be alkyl cyanide. But in another reaction, when the haloalkane reacts with AgCN, when the haloalkane reacts with AgCN, same in alcohol, and on heating, we will get RNC, alkyl isocyanide. The two difference. What is the difference between these two reactions? In this reaction, alkyl halide react with silver cyanide, then the product will be alkyl isocyanide. But in the above reaction, haloalkane react with potassium cyanide as well as sodium cyanide, the product will be alkyl cyanide. यहाँ हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है बच्चों? एल्काइल साइनाइड मिलेगा, और नीचे वाले रिएक्शन में हमें यहाँ क्या मिल रहा है? एल्काइल आइसोसाइनाइड मिल रहा है. Why the product becomes different? Why the product becomes different? The reason behind it that here KCN is ionic in nature. KCN is ionic compound. It is ionic in nature and breaks down in two ions, that will be K plus and Cn minus ion. Due to the ionic nature, the C bond C, the C bond of one C bond of cyanide and another C bond of alkyl halide, the C bond C is more stronger than C bond N of cyanide, and this carbon is of alkyl halide. The C bond C is stronger than the C bond N, due to which the carbon is more predominant to attack on the alkyl part and form alkyl cyanide. यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? दो तरह के न्यूक्लियोफिलिक साइट्स मिलती हैं. एक कार्बन से भी अटैक हो सकता है एल्काइल हैलाइड पे, एक साइनाइड के नाइट्रोजन भी अटैक कर सकता है, परंतु कार्बन जो है वो मोर प्रीफरेबली प्रीडोमिनेंट है अटैक ऑन द एल्काइल हैलाइड. देन वी विल गेट आरसीएन एल्काइल साइनाइड. आप एक ही चीज याद रखें, केसीएन फॉर्म आयोनिक नेचर. ड्यू टू आयोनिक नेचर इट विल फॉर्म एल्काइल साइनाइड. बट in AgCN, this bond is formed by the mutual sharing. That means it is covalent. AgCN में ये bond कैसा है? Covalent है. Due to this covalent bonding, the nitrogen atom having an electron pair, free electron pair, this free electron pair are more suitable to form the product. This nitrogen atom having electron pair is more suitable to form a product, and the product will be isocyanide, and the product will be isocyanide.
ड्यू टू द कोवेलेंट नेचर। बेटे इस AgCN के अंदर यह कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करता है, म्यूचुअल शेयरिंग शो करता है। ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग नाइट्रोजन एटम ही ओनली ऐसा एटम है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे डोनेट करने के लिए, बट इन KCN कार्बन एंड नाइट्रोजन बोथ हैव द फ्री इलेक्ट्रॉन्स to form a product. So this is the reason behind it when haloalkane react with potassium cyanide to give alkyl cyanide, and when haloalkane react with silver cyanide to form alkyl isocyanide. This reaction is very important reaction for the examination point of view. So remember this reason and note down in your copy. Then the next reaction of NSR is, formation of thioalcohol. Formation of thioalcohol. What is thioalcohol? Thioalcohol means, students, SH. SH is known as thiol. Thioalcohol या thiol. When haloalkane reacts with sodium hydrogen sulfide, it is sodium hydrogen sulfide. ये क्या है? That is sodium hydrogen sulfide. When alkyl halide haloalkane react with sodium hydrogen sulfide, sodium hydrogen sulfide, then on the elimination of sodium halide we will get, and on heating, RSH. RSH. This RSH is thioalcohol. RSH क्या है यहाँ? Thioalcohol. और कौन सा thioalcohol? Alkyl thioalcohol. Alkyl thioalcohol. ये जो रिएक्शन है स्टूडेंट्स, this reaction also proceeds in the presence of ethanol. अल्कोहल की प्रेजेंस में ही होती है। This reaction also proceeds in the presence of alcohol and we will get thioalcohol. So these 7 reactions are of nucleophilic substitution reaction. 5 were discussed in the previous video and 2 reactions are present here. This is the nucleophilic substitution reaction shown by the haloalkane part. Okay students? Students, next type of chemical property is elimination reaction. The second type is elimination reaction. Elimination reaction को हम हिंदी में क्या कहते हैं? विलोपन अभिक्रिया. That means any substance are eliminated from the haloalkane part and formation of unsaturated compounds in these reactions. The second one is elimination reaction. Elimination reaction also known as in haloalkane part dehydrohalogenation. Dehydrohalogenation. In haloalkane part it is also called as dehydrohalogenation. Students, first we discuss about elimination. What is elimination? The removal of 2 atoms of groups. Removal of 2 atoms of groups, one being hydrogen atom and the other being the leaving group. One is hydrogen and other being leaving group. Then the formation of pi bond occurs. That the formation of pi bond occurs. That means unsaturated compounds are formed. See in the reaction. Here we have a leaving group. This is a compound. In this compound, this is leaving group and here the hydrogen atom are present to complete their valency. जिस कार्बन पर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होगा, the living group present on the carbon atom, that carbon atom are represented by
अल्फा पोजीशन। जिस कार्बन एटम पर हमारा लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होगा वो कार्बन को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अल्फा से। उसके जस्ट बाद क्या कौन सा कार्बन होगा, दैट इज बीटा कार्बन। द पोजीशन विल बी बीटा कार्बन। हमने कहा एलिमिनेशन 2 एटम्स का रिमूवल होगा, one is hydrogen and the other is living group. This is a living group and another hydrogen atom is removed from the beta carbon, that is hydrogen. ये हाइड्रोजन हो सकता है, ये हो सकता है या ये हो सकता है, but from the beta position. Then what will get, CH2 double bond CH2. That means formation of pi bonds occurs. यहाँ किस तरह के कंपाउंड बन गए, अनसैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बने। That means formation of pi bond occurs. That type of reaction is known as elimination reaction. These reactions proceed in the presence of some reagents like concentrated potassium hydroxide. Alcoholic part of potassium hydroxide is the catalyst of elimination reaction. So we will discuss about the dehydrohalogenation reaction for the haloalkanes. In this, formation of alkene occurs, students. Formation of alkenes occurs by this dehydrohalogenation. Dehydrohalogenation मतलब है डी यानी निकलना, हाइड्रो हाइड्रोजन का एंड हेलोजन का भी निकलना। ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स होगा इस रिएक्शन को, और हम क्या कह सकते हैं, दिस रिएक्शन आल्सो कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन। इसको और क्या कह सकते हैं हम, बीटा एलिमिनेशन कह सकते हैं, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन भी हम कह सकते हैं। चलिए लेट अस टेक द रिएक्शन। हमने क्या लिया, यहाँ एक रिएक्शन ली RX when react with alcoholic KOH, when reacts with alcoholic KOH, here we will take the 2 moles of alkyl halide. Here we will take 2 moles of alkyl halide and the product will be R double bond R. यहाँ हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा बच्चों, R डबल बॉन्ड R मिलेगा। हम इसको एक रिएक्शन से भी देखते हैं। ये हमने एक कंपाउंड लिया जिसका क्या नाम है, दैट इज नोन एज एथिल ब्रोमाइड। इट इज एथिल ब्रोमाइड। इस एथिल ब्रोमाइड की हम रिएक्शन करवा रहे हैं एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। स्टूडेंट्स mark my point and remind it, if the potassium hydroxide solution present in alcohol, यदि alcoholic KOH है तो always alkenes are formed, and if aqueous KOH is present then the halogen part, that means the nucleophile, is replaced by another nucleophile, that means OH replace only Br when aqueous KOH is present, but here alcoholic KOH is present, then always unsaturated compounds is formed, that will be alkenes, alkynes, etc. Here in the presence of alcoholic KOH and on heating, this carbon is alpha carbon, this carbon is beta carbon, and from here leaving group Br removed, and from the beta carbon hydrogen will be removed and the product will be CH2 double bond CH2, symmetrical alkene will be formed. This is the reaction of beta elimination. Why it is called beta elimination? Because the hydrogen atom is removed from the beta position, so that we call it beta elimination. Okay students, now we will see the reactivity of haloalkanes towards alcoholic KOH. हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देखते हैं कि हमारे प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड्स और टर्शियरी एल्किल हैलाइड्स में कौन इसके साथ, कौन बीटा एलिमिनेशन या एलिमिनेशन रिएक्शन को फास्टली देता है। So the order of reactivity of the alkyl halides towards beta elimination, order of reactivity
of alkyl halides. 3-degree alkyl halides are more reactive than 2-degree alkyl halides, more reactive than 1-degree alkyl halides. The AH is alkyl halide. 3-degree alkyl halide मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा किससे? 2 डिग्री से। 2 डिग्री मोर स्टेबल बनाएगा किससे? 1 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड फॉर्म लीस्ट स्टेबल एल्कीन कंपाउंड्स. Okay students, now one point also noted in your notebook which will mention here. Students, in the dehydrohalogenation of 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स, यदि हम 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स की डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन करवाते हैं एंड इफ मोर देन 2 आइसोमर्स आर प्रेजेंट, यदि 2 से ज्यादा आइसोमर का फॉर्मेशन होता है, then the which type of elimination occurs and which product is more stable? If 2 isomers are formed, then which product is more stable? This will decide by a rule. यदि आपके इस 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से 2 या 2 से ज्यादा आइसोमर्स प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, तो एक फैक्टर, एक रूल डिसाइड करता है कि which product is more stable. That rule will be Saint-Jaffe rule. यहाँ वो रूल लगेगा, कौन सा रूल है बच्चों? That is Saint-Jaffe rule. Saint-Jaffe rule. What do you mean by Saint-Jaffe rule? This rule says that the formation of product is more stable when the alcoholic part of KOH react to that carbon atom which have less number of hydrogen atom. I am explaining again. हाइड्रोजन एटम जो है वो उस बीटा कार्बन से एलिमिनेट होगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम है, वो मोर स्टेबल प्रोडक्ट होगा. द प्रोडक्ट विल बी मोर स्टेबल फ्रॉम दैट कार्बन एटम which have less number of hydrogen atom. मैं आपको इसको एक एग्जांपल से क्लियर करता हूं. CH3, CH, Br and CH3. Students, the leaving group attached to that carbon, that is known as alpha carbon, and here 2 beta carbon atoms are present. Here 2 beta carbon atoms are present. Here हाइड्रोजन यहां से भी जाएगा और यहां से भी जा सकता है, दोनों ही सेम प्रोडक्ट देंगे, सेम ही टाइप की एल्कीन बनेगी, तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा. बट इफ हियर इस अल्फा कार्बन के इधर आपको इथाइल मिल रहा है, इधर आपको मिथाइल मिल रहा है, यहाँ बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन संख्या 2 है और यहाँ आपके पास नंबर कितने हैं? 3 हैं. देन व्हिच विल बी द मोर स्टेबल प्रोडक्ट? यहाँ दोनों तरह के प्रोडक्ट बनेंगे बच्चों. 2 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म. फर्स्ट वन एल्कीन इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3. एक हमारे पास ब्यूट 2 बनेगा और एक में यहां से हमारा हाइड्रोजन रिमूव होगा. देन CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 and CH3. That means said that the beta carbon which have less number of hydrogen atom form more stable product. This product will be 80% formation and this product will be 20% formation. This is more stable product according to Saint-Jaffe rule. According to Saint-Jaffe rule. And the more stable product, these 2 isomers, more stable and less stable product, also form 2 isomers cis and trans. Cis and trans. This will form trans isomer and this will form cis isomer. The trans isomer is more stable than cis isomer. So this is the elimination reaction, students. This reaction proceeds in the presence of alcoholic KOH. Alcoholic KOH. Okay students, this is the elimination reaction. Okay, thank you.